about organelles. ठीक है? So in cell organelles, we were left with the structure of centrosomes. Now tell me, we discussed about centrosome, है ना? हमने centrosome पे ही छोड़ा था. So firstly, फटाफट इसको cover करते हैं, then we will move to the plant view. So centrosome में क्या होता है? Who is going to tell me? Firstly, it's just a revision class. ठीक है? So you already know about this. So firstly, tell me, what is centrosome? Yes. क्या होता है सेंट्रोसोम बेटा? Where it is present and where you learned about this? ये बताओ फटाफट. सेंट्रोसोम कहाँ पड़ा है? कहाँ इसका फंक्शन होता है? महक. यस बेटा. अच्छा चलो. Let me give you hint here. ठीक है? I'm giving you hint. This type of structure you learned where? इस टाइप का स्ट्रक्चर कहाँ पड़ा है? एक तरह से मैंने आंसर ही बता दिया. So tell me where it is present, where this structure is present. गरिमा. Yes beta. Gurjot is there. Sashprit is here. Sashprit, can you tell me? Okay, Harsimran, they messaged. In animals, okay beta, in animals, that's right. But animal cell में ये वाला structure का form होता है. Where it forms? Metaphase. Is it metaphase? Is it metaphase? Metaphase में इस shape होती है. So let's go to metaphase also. ठीक है? So in metaphase, this is a plate जिसको हम कहते हैं metaphasic plate. ठीक है? और जो भी आपके क्रोमोसोम है वो align होते हैं in this plate. Yes? So it's not a metaphase. Firstly, we are talking about sister chromatids or homologous chromosome move towards different poles. ये दोनों different poles है, one pole and the second pole. So कौन से phase में homologous chromosome in meiosis और sister chromatids in mitosis जो है move करती हैं towards different poles. Yes बेटा, which phase? Exam है आपके, half yearly exam. You have to know about this बेटा. It's just a simple thing. Pole की तरफ, towards pole, sister chromatids and homologous chromosome कब move करते हैं? Which phase? कहाँ पर ये अलग हो जाते हैं? They get separate. Disjunction phase है ये. Yes बेटा? Okay, Navjot. Anaphase. Yes, it's right. It's anaphase. Anaphase में बेटा disjunction होती है और हमने aneuploidy पढ़ी थी. We learned about aneuploidy. That is non-disjunction. कि जब sister chromatid और homologous chromosome separate सही से नहीं होते. That leads to aneuploidy. But here, in case of meiosis, homologous chromosome, I'm talking about meiosis 1, ठीक है? In case of mitosis, sister chromatids move towards different poles. अब ये जो धागा जैसा दिख रहा है, fiber-like structure, these are mitotic spindle. Now, this round structure is what? ये क्या है? What is this? गुरजोत. Yes, beta. What is this? Centromeres. Centromeres? Centrosomes. Yes, Supri. It's Supri said centrosome. Navjo said centromere. Centromere is different. It's different. ठीक है? Centromere is different.
centrosome. We are talking about here centrosome. ठीक है? So yes, Supreet is right. ठीक है, Supreet, you are correct. So here am I also appreciating your answers in the chat box also. So yes, this is right. अब ये जो centrosome है, इसके अंदर क्या होता है? What is inside the centrosome? क्या होता है इसके अंदर? Who is going to tell me? What is inside the centrosome? अभी ये यहाँ पर है. We are talking about M phase. ये भी M phase की बात करें because in M phase these events happen. ठीक है? If we talk about, okay, let's go to the interphase. The interphase जब cell divide नहीं कर रहा, ठीक है? We are talking about when cell is not dividing, interphase. ठीक है? So during interphase what happen? This is nucleus. ठीक है? ये nucleus है. Nucleus के साथ centrosome होते हैं. Okay, they are lying near to the nucleus. Here centrosome. ठीक है? Now इसको zoom करके देखते हैं. Zoom it. Centrosome को. अब centrosome के अंदर क्या होते हैं? Okay, Supreet is saying centrioles are present in centrosomes. That's right. So who can tell me how many centrioles are present and what is their position? Okay, Ripanjot, pair of centrioles. That's nice. So I can see you are more active in chat box. हाँ? सब जो है ज़्यादा active है chat box में. Message खेलें. चलो, it's okay. Somehow you are responding. That is more important. ठीक है? So that's right. अब मुझे बताओ centrosome के अंदर क्या है? You said centrioles and in pair. Pair means we are talking about they are present in two numbers. That's also right. Now what's their position? Yes, Supreet, you're right. Two are present. That's right. Two centrioles are present. Now tell me their position. How they are positioned with respect to each other. उनकी position कैसी होती है एक दूसरे के साथ? क्या ये ऐसे होते हैं centrioles? दोनों ऐसे खड़े हैं और they are lying down like this or they are positioned like this. What's their position? How they are perpendicularly arranged. They are perpendicular to each other. That's good. Good job. That's good. Supreet in a chat box. Supreet replied. So they are perpendicular to each other. That's right. So now let's see. अब इसको बनाएंगे कैसे? Everyone इसको बनाओ क्योंकि हम सब mostly student what they do, they cram it and I hate this. ठीक है? I don't want my student to cram it. Understand this. Nucleus के पास centrosome है. Centrosome के पास अंदर क्या है? Two centrioles हैं. And how they position? They are perpendicular to each other. So let's see how they are perpendicular aligning with each other. तो उसको हम अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल वे में दिखा रही हूँ. Then we will discuss. अभी मैं इसको ऐसे बना रही हूँ. ठीक है? Simple. They are perpendicular to each other like this. These are centrioles. ठीक है? Centrioles lying perpendicular to each other. Now, who knows the structure of centrioles? इसको centrioles का structure पता है. Okay, so Preet knows. What about others? You can write down in the chat box yes, yes करके. Let's see the vote. Huh? Let's see how many of you know about this. So you can write down in the chat box also. चैट बॉक्स में भी कोई नहीं लिख रहा. What's the reason? अभी तक तो सारे चैट बॉक्स बहुत एक्टिव थे. What happened suddenly? Yes. सिर्फ सुप्रीत को पता है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर और किसी को याद नहीं है या पता नहीं है. There is a different thing that you don't remember or you don't know. I think you don't remember what I assume. ठीक है? So let's see. चलो इसको करते हैं. सेंट्रियोल किसका बना होता है? इसमें जो है 9 आपके यूनिट्स होते हैं. ठीक है?
and that's why their arrangement is 9 plus 0. So let's see here. Everyone pay attention here. सबने बनाना है, use 3 different colors at least. ठीक है? Starting from center. Center में ऐसे बनाओ round structure. Now you have to use 4 basically, 4 different colors you have to use. ठीक है? So let's see here. सिर्फ मैं फर्स्ट में लिख रही हूँ, बाकी सब में you can assume yourself. It's A, it's B, and it's C. I will tell you what are these also. So firstly इसको बनाओ everyone. अब ये जो थ्री का स्ट्रक्चर है, दे आर प्रेजेंट इन थ्री, है ना, साथ में तीनों इकट्ठे हैं. सो यू विल मेक 9 ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस ओनली. ठीक है, 9 स्ट्रक्चर सेम लाइक दिस यू हैव टू मेक. सो लेट्स सी हियर. अब मैं ये सेकंड में इसलिए लिख रही हूँ, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम राइटिंग इट अगेन. व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल मेकिंग दिस, सॉरी, yes, so what you have to consider while drawing this, the position of A and B, sorry, A and C. Why? A, there is a linkage between A and C only. ठीक है, A और C आपस में ज्वाइन करेंगे, तो A हमेशा C के सामने होना चाहिए. Only then they can lay. So when you draw this structure, so draw in this way that C and A come like this. They should come like this. ठीक है? So that is how you have to make it. So now here, कितने बन 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 more to go. So everyone, you should know how to draw this. And one more, last.
So make like this first. This is a pointer head on the A. What is the role of that? It connects with this. Is it done, beta? Yes, ma'am. Okay. So now, what are ABC? जो अभी तक हमने ABC किया है वो है क्या? Let's understand that also. So ABC are basically microtubules. Microtubules are what? These are proteins basically. Microtubules are proteins that helps in framing cytoskeleton, मतलब सेल का skeleton बनाने में help करते हैं. ठीक है? So that is their role. Microtubules are proteins that help in framing cytoskeleton. Cyto means cell, skeleton मतलब जो हमारा ढांचा होता है, ठीक है? So that is what it meant. ठीक है? It is in eukaryotes only. ठीक है? And because of this, cell has some definite shape. ठीक है? So microtubules, these are ABC. ठीक है? And because here you can see C and A is linking. So this linker is called AC, or we can say CA linker. क्योंकि ये C और A जो प्रोटोफिलामेंट्स है उसी को वो ज्वाइन कर रहा है. So it is called AC, या फिर CA बहुत रेयर होता है. So you can say AC linker. Okay? AC linker. And in the center, जो ये सेंटर में ज्वाइन कर रहा है जहां से उसको कहते हैं सेंटर हब. So this is central hub. ठीक है? And these blue lines here जो A से निकलते हुए सेंट्रल हब में जा रही है, these are called radial spoke. Okay? So this is the structure of centriole. तो ये centriole ऐसा ऐसे, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, किस किस ने कभी भिंडी काटी है या कटी हुई देखी है? लेडी फिंगर. भिंडी आजकल तो सीजन भी है ना भिंडी का. काटे देखा है? सो अंदर से जब आप उसको देखोगे उसमें एग्जैक्टली सेम तो नहीं होते, बट इट शेप इज लाइक दिस. सेंटर से होता है और ऐसे ऐसे उसमें जो लाइंस होती हैं और बीच में गोल गोल जो उसके बीज होते हैं वो होते हैं. सो यू कैन रिलेट द स्ट्रक्चर जैसे भी दिख रहा है.
It is somehow related with the lady finger. So now you can connect it with the lady finger. So you can draw like this. But what you have to remember, you have to make 9 structures like this. भिंडी के वो 6 या 5 मत ले लें. ठीक है? Then it will not work as a centriole. Centriole के लिए you have to make 9 repeated structures like this. And this arrangement is called 9 plus 0 arrangement. कई बार नीट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है. सो इट इज 9 प्लस 0 अरेंजमेंट. 9 मतलब ये जो 9 हमने बॉक्सेस प्रोटोफिलामेंट्स के बनाए. ओके. 0 वाई 0 बिकॉज अंदर जो यहाँ पर है, यहाँ पर कोई प्रोटोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, 0 है. सो दैट्स व्हाई दिस अरेंजमेंट इज 9 प्लस 0 अरेंजमेंट. ठीक है? सो इसको 9 प्लस 0 अरेंजमेंट कहते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू आस्क, लेट्स गो बैक. ये जो सेंट्रियोल्स है, दीज आर प्रेजेंट इन पेयर. अभी जो पेयर में जब सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट? एक स्पेसिफिक नेम है इसका. व्हाट इज दैट स्पेसिफिक नेम फॉर द पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल? व्हाट डू वी कॉल इट? Diplosome. That's nice. Good job. That's nice. So it is called pair of centrioles. Okay. लिख लो बेटा. Pair of centrioles called diplosome. It is called diplosome. ठीक है? और let's go deep. अभी यहाँ पर जो जैसे हमारे साइटोप्लाज्म होता है इन सेल, यहाँ पर जो ऐसा फ्लूइड प्रेजेंट है, व्हाट डू वी कॉल इट इन सेंट्रोसोम? उसको क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल इट? Amorphous pericentriolar material or fluid. यस, वो तो दैट इज फ्लूइड का पूरा डेफिनेशन हो गया. बट एग्जैक्ट वर्ड क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दिस? कैन वी कॉल इट सेंट्रोस्फीयर? इस स्ट्रक्चर को कैन वी कॉल इट सेंट्रोस्फीयर? सो इट इज सेंट्रोस्फीयर. So beta, these are the basic छोटी सी terms होती हैं that can come in exam in objective questions, especially in your competitive exam. It can come. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम डेफिनेशन पे वर्क कर लेते हैं. हम जो फटाफट ऊपर की जो बड़ी बड़ी चीजें हमें जो भारी लगती है, व्हाट वी अज्यूम ये तो पेपर में पक्का आएगी, और एग्जामिनर को भी पता है बच्चे ने पक्का किया होगा, तो वो क्या करता है, वो डालता है जो उसको लगता है बच्चे ने स्किप किया होगा. सो यू हैव टू बी मास्टर इन दैट ऑल्सो. ठीक है? So now is it clear centrosome का structure everyone? Is it clear to everyone? Centrioles. So this is the Yes, ma'am. structure of Yes, centrosome. ma'am. ठीक है? So now we are moving ahead with our next topic, that is plant kingdom. ठीक है? We are going to revise plant kingdom in basically we are going to take very basic terms. ठीक है? जो basic terms इसमें आती है. Everyone note down this. एक फ्लो चार्ट बनाएंगे ये. ओके. तो यस स्टूडेंट्स, इसको फटाफट बनाओ. And I request students to turn their camera on जैसे पहला था. I want to see students also. ऐसा तो नहीं लगना चाहिए मैम खुद को ही पढ़ा रही है ना? Yes. Such a obedient students you are. हैं? Cooperative also. That's nice.
Good. So yes. So I'm going to ask you only because this chapter is done. Okay? So I will ask you, we are quickly move to the then generations. So yes, who is going to tell me about algae? Habitat of algae. Who is going to tell me? Where do we find algae? Yes, Supreet. Yes, beta. Turn on your mic. Mic is off, beta. Supreet. Turn on your mic, then speaker, beta. It is found in moist stones, soil, and wood. Good name. But mostly, if we say predominantly, where do we find algae? जब हम सोचे, let's think about this. Algae. क्या दिमाग में आता है? कहाँ पर मिलेगी? अच्छा चलो, वो छोड़ो. अगर अभी मैं फटाफट सबको बोलती हूँ, कैमल के बारे में सोचो. पीछे क्या नजर आता है? पहाड़ नजर आते हैं, डेजर्ट नजर आता है या समुद्र नजर आता है? व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू इमेजिन व्हेन यू लिंक कैमल? क्या हैबिटेट? डेजर्ट. Desert. तो डेजर्ट. सो व्हेन वी थिंक अबाउट एल्गी तो हमारे दिमाग में क्या आता है सबसे पहले? कहाँ मिलेगी ये? वेयर डू वी फाइंड एल्गी? Water. Water. Yes, Arman, you're right. So we can say water और उस habitat को what do we call it? We say aquatic. ठीक है? Aquatic. मतलब पानी में मिलेगा. ठीक है? Mostly we find it water. Now, coming to bryophytes. Now, who is going to tell me about the bryophytes? Bryophytes are very interesting. सबसे interesting मुझे bryophyte लगता है. So, who is going to tell me about the bryophytes? If, like we say, algae we found in water. Amphibians of plant kingdom. Har Simrandeep Kaur is saying to enter Jasmine Kaur. Okay. So, amphibians of plant. Why these are called amphibians? What is the reason that they are, called as amphibians? Who is going to tell me this? Jaldi batao, jaldi फटाफट. Ma'am, because they require water for sexual reproduction. Yes, that's right. That's right. Har Simrandeep is also correct because it requires water to reproduce. Okay. Basically, for not for the surviving, but for to continue their species, they need water. And continue of species is obviously through reproduction only. So that's why they are called amphibians. ठीक है, इसीलिए उन्हें amphibians कहा जाता है. ठीक है, I can see many students are participating through chat box. That's right, beta. That means you are into lecture. अभी lecture में घुसे हुए हो सब. That's right. So yes, so we can say these are amphibians. Means they can live on land majorly, but for reproduction they need water. ठीक है, that's why they are amphibians. ठीक है. If we say that they are amphibians, do they have vascular tissue? क्या उनके पास vascular tissues होते हैं? Do they have vascular tissues like phloem, like xylem? Do they have? No, ma'am. They don't have. So हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? What we can say? No vascular tissue. I'm writing it. Okay, चलो पूरा ही लिख देती हूँ so that you can note down. No vascular tissues. ठीक है? They don't have vascular tissues. अगर vascular tissue नहीं है, उनके ऊपर जो है एक कवरिंग होती है प्लांट के ऊपर, स्पेशली ऑन द लीव्स, क्यूटिकल. डू दे हैव क्यूटिकल्स? डू दे हैव क्यूटिकल्स? नो, दे डोंट हैव क्यूटिकल्स. लिखो, नो क्यूटिकल्स. एंड इवन they don't have stomata also. No stomata. They don't have stomata.
Okay. Now coming to their feature, why we are discussing more about the bryophytes? Because algae का red algae हो गया, brown algae हो गया, green algae. You must learn about this. These are basically different on the basis of storage और जो store करते हैं, ठीक है, component and the chlorophyll or we can say pigments. On the basis we can differentiate them, ठीक है? So that you can do. अब आ जाते हैं next thing. Amphibians हैं. They don't have stomata, they don't have vascular tissue, they don't have cuticles. Their height is also short. They are short-heighted plants. उनकी height छोटी होती है. They are short-heighted. And they live in shady area. जहां पर थोड़ा shade हो, धूप से direct नहीं आते. उन plants को क्या कहते हैं? Who is going to tell me? What do we call plants that live in shady areas? There is specific term for that. Okay, start from S only. Shade और वो जो term है that also start with the S only. What is that? I can say someone message me. Okay, so I'll tell you. Sciophytes. That is called sciophytes. Sciophytes क्या होते हैं? Those live in shady areas. Sciophytes. Okay, note down this. They are sciophytes. ये हो गया. Now, let's move to one more thing. अभी हम वापस इसी में चलते हैं. Okay, let's do one thing. Pteridophyte पे चलते हैं. Let's go to the pteridophyte. Now, who is going to tell me about the pteridophytes? अभी भी पानी They में possess vascular tissues. they possess vascular tissues. Okay, and what is the main quality of them? Ma'am, first terrestrial plant. First to land plant. That's right. These are first to land plants. First to land plants. इसको लिखो बेटा. And they are having vascular tissues. Present. Can you tell me? हम plant को क्या कहते हैं? They are having vascular tissue. What do we call them? Those are having vascular tissues. जैसे अभी हमने कहा plants who lives in shady area. ठीक है, उसे हम कह रहे हैं sciophytes. Now for the plant who is having vascular tissue, what do we call them? क्या कहेंगे? Brachyphytes. That's right, tracheophytes. So they are called tracheophytes. They are called tracheophytes. इसका मतलब algae and bryophytes are what? These two are a tracheophytes. They don't have vascular tissues. These are a tracheophytes. Okay. अब इसके बाद gymnosperm और angiosperm we will discuss later on क्योंकि इसको सारे बच्चे कर ही लेते हैं. So now let's move again. You know about the stages gametophytic and sporophytic? Yes or no? Are you aware of these two terms? Yes, beta, say yes or no. Yes, ma'am. So in algae, which we can say stage is dominant? Gametophytic or sporophytic? Gametophytic. Okay, gametophytic, right. And what is gametophyte? Gametophyte होता क्या है?
What is gametophyte? Structure bearing male and female sex organ. Okay, now Jyoti is saying gamete producing body. So that produce gametophyte is that produce gametes. ठीक है? Gametes कौन produce करेगा? Structure है ना जो gametes को produce कर सकता है. ठीक है. What is sporophytic? Yes, sporophytes. What are sporophytes? What are sporophytes? Sporophytes क्या होता है? Spore producing body. Spore producing body. That's right. So sporophytes are there. ठीक है? अब बताओ in bryophytes which stage is dominant? Gametophytic or sporophytic? Which stage is dominant? Gametophytic. Gametophytic. Although it is having sporophytic also, but gametophytic is dominant. What is the reason? इसमें gametophytic किसको कहते हैं? Let's understand this. They have rhizoids, ठीक है, and a stem-like structure here. They do have leaf-like structure. And this structure produce gametes. So this structure is gametophyte. ठीक है? This structure is gametophyte. But they do have sporophytic. So sporophytic में क्या जाता है? इसी से एक structure निकलता है. Let me erase this part now. This is called capsule. And this is seta. That is shoot basically. And this is sporophyte. That produce spore. Now because sporophyte is dependent upon gametophyte, क्योंकि सारी जो nourishment है उसको जो खाना मिलता है, it is getting from gametophyte. So that's why gametophyte is dominant. ठीक है? In this bryophytes. Is it clear to everyone? कि ये ऐसे grow करता है, ऐसे ये दिखते हैं. It looks like this. Is it clear? क्योंकि mostly students get confused with this term, gametophyte, this thing. ठीक है? So you should know about this. Is it clear to everyone? Gametophytic, sporophytic क्या है? That is stage, but the organs are what? Here, gametophyte में क्या आ गया? Leaves are there, ठीक है? Rhizoids are there. In sporophytes, we have seta and capsule, ठीक है? That release later on spores, ठीक है? जब वो एक organized structure बनता है, ठीक है? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Can we say here sporophytes are parasitic? Can we call sporophytes here parasitic? कह सकते हैं इसे? Yes or no? पैरासिटिक क्या होता है? जो आप ही के साथ रहता है और आप ही से खाना ले रहा है या आप ही से जो है आपकी चीजें ले रहा है. बेसिकली इट इज टेकिंग समथिंग फ्रॉम यू जो आपको चाहिए, ठीक है? सो दैट इज अ पैरासाइट. यस और नो? लेट्स एग्जांपल ऑफ जब आप छोटे होंगे तो शायद आपके सर पे जुएं पड़ी होंगी, है ना? सो वो आप ही के सर पे रहती हैं, आप ही का खून चूसती हैं. सो दैट आर पैरासाइट्स ओनली, है ना? लीच, यस सुप्रीत, लीच, ठीक है? मॉस्किटोस. सो दीज आर पैरासाइट्स ओनली, ठीक है? आप ही के पास आप ही की स्किन पे बैठते हैं, ठीक है? एंड देन दे सक ब्लड फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है? सो दीज आर पैरासाइट्स ओनली. सो यहाँ पर भी जो स्पोरोफाइट स्टेज है, इट्स ग्रोइंग ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है? फिर उसी से जो उसका नरिशमेंट, उसका जो है, उसकी जो उसने बनाया है फोटोसिंथेसाइज करके खाना, it is taking that. So that's why here sporophytes we can say parasite. Is it clear? Yes, ma'am. So that is what. But here जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे तो क्या होगा? Sporophyte will be dominant.
एंड गैमेटोफाइट जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा. When we say sporophyte is dominant, तो आगे वाले इसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट इज शॉर्ट लिव्ड. जो यहाँ पर है, if we move to pteridophyte, गैमेटोफाइट स्टेज जो है शॉर्ट लिव्ड, थोड़े टाइम के लिए होती है, जस्ट टू प्रोड्यूस गैमेट्स. उनका काम सिर्फ गैमेट्स प्रोड्यूस करना. यहाँ पर वो गैमेट्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ इट इज नरिशिंग स्पोरोफाइट्स आल्सो. ठीक है, इज इट क्लियर? सो दैट इज वन. अब आ जाते हैं नेक्स्ट थिंग पे. थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं आगे. आई थिंक वी हैव 10 minutes ऑलमोस्ट. ठीक है, सो वी ट्राई, आई ट्राई की जितना हो सके. ठीक है, सो बेसिकली if we say gametes, gametes are what? In us also we have gametes, male gametes, female gametes. Similarly, in plants they have male gametes, female gametes. And male gametes produced by male sex organs, female gametes produced by female sex organs. That we know. अगर हम human के example लें, we know about this. ठीक है? Similarly, let's see in plants, especially when we talk about bryophytes. So, इसको ऐसे लिखो, sex organ, ठीक है, सेक्स ऑर्गन एंड गैमीट्स. ठीक है, राइट डाउन लाइक दिस. हियर इट्स मेल एंड हियर इट्स फीमेल. So male is antheridium. Okay, it's antheridium, and what it produce? It produce gamete that is called antherozoid. Antherozoids. And how it looks like? So it looks like heart shape. This. This is sperm mother cell. ठीक है. Let's move to the female. So here it's archegonium. And it produce egg. इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. ठीक है. So these are the gametes. Finally, gametes released by gametophytes. Organs you know, antheridium और archegonium ने release किए gametes, respective gametes. Now gametes are released, but because as we know, bryophytes are what? They are amphibians. Gametes get fused in water. पानी में होंगे. That's why here coming why they are amphibians. So the fusion of these two take place in water. ये जो fusion है जिसको हम कहते हैं fertilization, it is happening in water. ठीक है. So what they form zygote. Male and female gametes mix हो रहे हैं, they form zygote. But zygote अभी एकदम से embryo form नहीं करेगा. It will pause. ठीक है, वो pause होगा एकदम से जो फटाफट cleavage. No, nothing is going to start immediately. It will take a pause. ठीक है, वो pause लेगा. Then it undergoes meiosis. ठीक है, not एकदम से. अब वो meiosis जाएगा. ठीक है, जब उसमें meiosis होगी तब क्या होगा?
इसको वैसे ही लिखो जैसे मैं बता रही हूँ बेटा। यहाँ तक हो गया? इज इट डन टिल नाउ? यहाँ तक सभी का हो गया? ओके, सो जाइगोट इज फॉर्म, सो लेट्स से इट्स अ जाइगोट। ठीक है, जाइगोट इज फॉर्म नाउ। इसकी इसी में लिख दो क्योंकि कई बार याद नहीं रहता, सो दैट्स व्हाई राइट डाउन कि इमीडिएटली जो है, डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली। एकदम से मियोसिस नहीं होगी। ठीक है, आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद, अभी नहीं होगी लेकिन बाद में तो होगा, सो इट विल फॉर्म मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, will form multicellular structure called sporophytes। अब जो स्पोरोफाइट इसके ऊपर अभी हमने देखा ग्रो हो रहा है, सो नाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म नाउ स्पोरोफाइट। सो वी नो, अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, इट इज ग्रोइंग ऑन गैमेटोफाइट। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या होगा? नाउ सम, नॉट ऑल, some cells of sporophyte undergo meiosis। उनमें meiosis होगी, and what they form haploid spores। They will form haploid spores, and these spores further germinate, spores germinate, and when they germinate, what they form gametophyte। तो फिर से जो गैमेटोफाइट था दोबारा आ गया, तो हमारी फिर से वही जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। अब ऑब्वियसली गैमेटोफाइट प्रोड्यूस gametes, then again fusion happen, then these cycles keep on going। is it clear? गैमेटोफाइट से चले, स्पोरोफाइट आया, अगेन कम बैक टू गैमेटोफाइट। is it clear to everyone? Okay. Yes, ma'am. So if we have to say where is haploid, where is diploid, diploid structure. So sporophyte is 2n, it's diploid, and gametophyte is haploid structure, it's n। So इन cycles को हम haplodiploidic cycles भी कहते हैं, because haploid diploid जो है हमारा change होता रहता है। So is it clear to everyone? अभी तक ये this cycle is clear? Any doubt? Okay, so we are short of No, ma'am. otherwise I was thinking to cover pteridophyte क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में want to explain you sporangia कैसे बनता है। चलो, if we have time next class में we will cover it। ठीक है? Any doubt? किसी को कोई डाउट बेटा आज की क्लास में कुछ भी that you want to ask or discuss? No, ma'am. That's fine। No, ma'am. No, ma'am. Okay, okay beta। So that's all in today's class beta। So we will meet in next class। ठीक है, अभी I think you have a class, chemistry class after this।
So right now you have 10 minutes to take a break. Have anything that you want to have. Okay? Okay. Bye. Bye, ma'am. Bye.